Good evening, friends. Jai Hind to all of you. My name is Navjot Singh, and I am a former officer of Intelligence Bureau. In this Spy Master series, we would be bringing to you the dark, deep secrets of the world of espionage. We will be bringing to you the top intelligence agencies of the world, where we will unravel, though demystify, certain things and brings to you certain wonderful and eye-catching operations conducted by these organizations in different parts of the globe. And what better way to begin our adventure by India's nemesis, India's adversary, on the other side of the red cliff. Yes, you guessed it right. The Inter-Services Intelligence, better known as the ISI. The ISI makes its way through the world of espionage by cultivating fractious relationships with China and Russia, the United States and the Europe, and with the known jihadist organizations across the globe. Ladies and gentlemen, this organization, better described as a state within a state, it operates with absolute impunity, and in more ways than one, it charts the foreign policy of Pakistani deep state. In fact, it is popularly dubbed as a death squad. In today's episode of the Spy Master series, we are going to unravel some dark secrets, deep secrets about this inter-services intelligence, the ISI of Pakistan. So friends, the ISI, it came into being in 1948, the 1st of January 1948, 75 years ago. Its headquarters is at Para, Islamabad, Pakistan, 33 degree 42 seconds north and 73 degree 4 seconds east. The motto of the organization is take your precautions. All right. The employees and the budget of the organization remains classified, but according to several accounts, it has around 10,000 employees. The organization is headed by a 3-star officer, generally a lieutenant general, and the current head of the organization is Nadeem Anjum, and he is known as the Director General. Friends, this Inter-Services Intelligence of Pakistan, its premier intelligence agency. It is involved in intelligence gathering, conducting covert operations, and supporting countries' national security efforts. So, formed in 1948 at the time of Kashmir intrusion of Pakistan, when the Kabylis raided. After that, after losing out the territory of Kashmir to India, the Pakistanis, they formed their ISI to conduct their covert operations and amp up their military intelligence capabilities. So, the Inter-Services Intelligence, it is also known as Bayan al-Khidmati Istikhbarat. It is the best known component of Pakistan's intelligence community. It reports directly to the Director General and is focused on intelligence gathering and intelligence information to the Pakistani government. So the ISI has a lot of its subdivisions. It is aided too by the another two agencies of the Pakistani intelligence, which are the Intelligence Bureau and the MI. But ISI is the premier agency, and it really holds the horses here. Let's talk about the different subsections of the Pakistan's intelligence organization. It has a covert action division, which is its child sister division. Then we have a joint intelligence division, joint intelligence bureau, joint counterintelligence bureau. This kind of tackles the intelligence agencies of the adversarial countries. And we have the joint intelligence north. Now this joint intelligence north, it deals with the Kashmir desk. So it deals with the Kashmir desk. So all the activities of the ISI with respect to Jammu and Kashmir are dealt with by the Joint Intelligence North. And another important is the Covert Action Divisions. These two, along with the Joint Intelligence Bureau and Joint Counterintelligence Bureau, holds the most important place in Pakistan's intelligence machinery. And the subsidiary bodies are Intelligence Bureau and the Military Intelligence. All right. So, being 1948, headquarters in Islamabad, and it has certain major operations to its credit,
the Soviet-Afghan War, which we will study in a little more detail, and Indo-Pakistan War of 1971, the Afghan War of 2001, and the Kargil War with India. So ISI has been instrumental in creating a lot of unrest in the area. So let's understand how it evolved as an organization. So if we talk about the command and the structure of the organization, it primarily consists of military service officers drawn from the three service branches of the Pakistan Army, Armed Forces, particularly the Pakistan Army, the Pakistan Navy, and the Pakistan Air Force. However, the agency has certain civilian recruits as well. Agency में कुछ civilian recruits भी हैं. Along with that, 1971 के बाद the organization formally headed हुई है by a three-star general. A three-star general, normally mostly he has been the lieutenant general rank officer who is appointed by the Prime Minister of Pakistan on the recommendation of Chief of Army Staff. The Chief of Army Staff recommends 3 officers to the Prime Minister, and the Prime Minister chooses one among them to appoint as the Chief of the ISI, who is the Lieutenant General. And the current head is Lieutenant General Nadeem Anjum. He reports to both the Prime Minister as well as the Chief of Staff. So let's understand one more thing here. How did the ISI come into being, and who was the brainchild behind it? So the brainchild behind the ISI was a former British Indian Army Major General, Sir Robert Cotham. At that time, he was the Deputy Chief of Staff of the Pakistan Army, and the selected Colonel Shahid Hamid. So these two people were instrumental. In the formation of the ISI. They were instrumental to the formation of the ISI. In fact, many analysts, along with Indian and American analysts mostly, they believe that ISI provides support to militant groups. Though these accounts have been unsubstantiated, but we have come across several accounts how they conduct covert operations and create disturbances through its sleeper cells across the border. In fact, ISI has been involved in several operations. It has been involved in several operations and created unrest across India, particularly the militancy, the Mumbai train bombings, the 2001 Indian Parliament attack, the 2006 Varanasi bombings, the August 2007 Hyderabad bombings, and the most tragic of them all, the 26/11 attacks in Mumbai. So the ISI has been accused of supporting Taliban at time and again. So supporting Taliban and recruiting and training the Mujahideen to fight Afghanistan in Kashmir. So if we turn back to the pages of history, after coming into existence, it has held a very anti-communist stance. So Pakistan's anti-communist stance, it had an anti-communist stance. So what it did, it allowed the anti-Soviet forces. It was seen as an anti-Soviet forces as a golden opportunity by the anti-Soviet forces. तो उस वक्त कोल्ड वॉर टाइम चल रहा था, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोल्ड वॉर के टाइम जो एंटी सोवियत फोर्सेस थी, फॉर एग्जांपल इट वाज द यूएस and the West, the Europe, they saw in the ISI in Pakistan as a great opportunity. And what it did, it tried to train the Pakistan's ISI in the CIA. It gave direct training to the ISI. It gave direct training to the ISI. So what other issues at that time were? The ISI had been adversarial. The ISI's approach had been adversarial to the minorities. For example, the Baloch people and the Bengalis before the 1971, after which Bangladesh was created. So that had held a great the anti-Baloch and anti-Bengali faction was dominant, and it wanted to also there was greater thrust on
Kashmir desk as well. So these were the major problems and major challenges that were created at that time. Also at that time there was a proliferation of madrasas, and radicalization of the youth was done. For example, the Jamaat-ud-Dawa, which came up, and eventually how it gave its backing to Taliban and Afghan Mujahideen at that time during the Soviet encounter. During the Soviet encounter in Afghanistan. So these Mujahideen, trained by the ISI, were expert in covert warfare and even actually being trained by the CIA and being used by the CIA to counter the Soviet advance there. At the same time, we have to understand one more thing here. We have to understand that the ISI also gave active support. It also gave active support to the Al-Qaeda and particularly Osama bin Laden. And post the 9/11 bombings of the United States, even ISI had given shelter. That is, allegedly they had given shelter to Osama bin Laden, and as we all know, eventually they were able to eliminate Osama bin Laden in Pakistan, in Abbottabad. So it shows the complicity of the ISI and the Pakistani deep state in supporting terror networks across the border. Along with that as well, Pakistan ISI at that time had been supporting Uyghur Muslims in the Xinjiang province of China, trying to radicalize them as well. The Xinjiang province of China, as a part of its covert policy. Furthermore, it had been actively involved in supporting the Bosnian Serbs, the Bosnian Muslims in Serbia during the siege of Sarajevo. So we need to understand how ISI had been trying to, further expand its wings and create its intelligence imprint on the world of espionage. In fact, it has been claimed that it supplied arms and ammunition. It airlifted arms and ammunition to help the Bosnian Muslims. And more so, the source of this financing of ISI mostly came through drug trade. So that also, these organized crime, the interconnections with the organized crime, all these things, they really created a lot of problems for various countries. So this needs to be understood here, how ISI has been involved in a lot of anti-terrorist activities and a lot of covert operations. We will understand its regimental structure as well, how the organization of this, how this intelligence organization is organized. At the same time, another point here is its close complicity
with terror groups like Haqqani Network, the Haqqani Network, Al-Qaeda, the Hizbul Mujahideen, which it has used in the Jammu and Kashmir, and the proliferated version of Jamaat Dawa, the LET, the Lashkar-e-Toiba. So friends, ISI has not just been providing intelligence and funding to the terror organizations and spewing venom inside India, but they are also providing direct protection. जो ISI of पाकिस्तान है वो पाकिस्तान के द्वारा जो मिलिटेंसी इंडिया में चलाई जा रही है उनको डायरेक्ट प्रोटेक्शन दे रही है मिलिशिया को. ये जो लो स्केल प्रॉक्सी वॉर हो रही है इंडिया में, ये जो काफ़ी देर से करता आ रहा है ISI, 1980 से हमने देखा था, जम्मू कश्मीर में शुरू हो गया, उसके बाद ये चलती रही वॉर. तो ये ISI का इसमें बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं गहरा इसमें रोल है. 1980 के दशक से ये चलता आ रहा है. 1971 की जंग में जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए तो पाकिस्तान की ये पॉलिसी रही टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स. तो इसी पॉलिसी के तहत पहले उसने जम्मू कश्मीर में, फिर पंजाब में एक अलग एक मुहिम चलाई ताकि वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके, अनरेस्ट क्रिएट कर सके. तो उसी मुहिम के तहत पाकिस्तान की ISI ने ये हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, देन जमात-उद-दवा, जो हमने देखा ये सारा ये एजेंडा ISI चलाता रहा है. तो ताकि ये कश्मीर की आवाम में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकें, उनको भारत से दूर होने में एक थोड़ा सा एक अपना प्रोपेगेंडा चलाता रहा है. तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की ISI है या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो इस तरह के काम करते रहे हैं. इसके अलावा हम देखें तो यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान से जो एग्जाइल्स गए हैं लोग, जो लोग पाकिस्तान की पॉलिसी के अगेंस्ट जो कुछ बोलते थे उनको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा. तो ईस्ट लंदन में कुछ ऐसे लोगों की असैसिनेशन हुई है, तो उसमें भी पाकिस्तान का हाथ माना गया है. तो ये पाकिस्तान की जो ISI है ये अक्रॉस द बॉर्डर जाके भी अपनी जो निफेरियस टेंडेंसीज हैं उनको ये अंजाम देती रही है. आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भारत के भी जो अलग अलग आप देखिए खालिस्तानी जो अलगाववादी हैं उनको भी शह देने का काम ISI ने बहुत ज़्यादा किया है. कनाडा में अगर हम देखें, एक है करीमा बलोच, ये एक थी कनाडा से मिसिंग हो गई थी. उसके बाद साजिद हुसैन थे, वो भी स्वीडन से मिसिंग हुए थे मई में. दोनों मारे गए और दोनों डूबने की वजह से उनकी मौत ये पाया गया. तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पाया गया कि दोनों में पाकिस्तान की ISI का हाथ था. ये बलोच नेशनल्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसी का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था. तो ये पाकिस्तान की ISI का हाथ रहा है. ये सिर्फ 2 ही ऐसे इंसिडेंट नहीं हैं, ऐसे सैकड़ों और इंसिडेंट हैं जिनमें पाकिस्तान की ISI का एकदम ज़बरदस्त हाथ है. ऑल्दो कनाडा और स्वीडन की सरकारों ने इसको खारिज किया, लेकिन ये एक बहुत ही एक कहते हैं ना, ये इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट देयर इज़ अ क्लियर हैंड ऑफ पाकिस्तान ISI in creating unrest and eliminating those people who are against its will. So इस तरह से we have to understand कि भारत में स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके अलग अलग तरह से एक अलगाववाद फैलाने की कोशिश ये सब पाकिस्तान करता रहा है, क्योंकि डायरेक्ट जंग में तो हमें वो हरा नहीं पाया. तो इस तरह से अलग अलग तरह से ये चीज़ें होती रही हैं. आपने देखा जब 1980 के दशक में सोवियत यूनियन का जब 1991 में वो ब्रेक डाउन हो गया और वो जो मुजाहिद थे, जो अफ़गानी जो इन्होंने टेररिस्ट प्रोड्यूस किए थे ये जो लश्कर के दौरान, तो ये उन्होंने उनका इस्तेमाल फिर यहाँ किया, कश्मीर में किया. तो ये CIA ने पहले ट्रेनिंग दी तालिबान को, अलकायदा को, फिर जमात-उद-दावा से आपका लश्कर-ए-तोयबा बन गया. उन सबको ये CIA ने पहले जो CIA के पोस्टर बॉयज़ थे, ये जो लश्कर वाले, अलकायदा वाले, बाद में ही उनके अगेंस्ट हो गए. और इन्होंने उनकी जो, अब देखिए जंग तो ख़त्म हो गई जो सोवियत वाली, उसके बाद वो जो मदरसाज वहाँ पे बहुत सारे बन गए थे, उससे जो लोगों को इन्होंने एक अलग तरह का वो एक माहौल क्रिएट किया था. तो उन बच्चों को जिनको इन्होंने रेडिकलाइज किया था उनको इन्होंने इंडिया की तरफ धकेला. इनफैक्ट ये देखिए पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है पाकिस्तान आर्मी
ISI ने ट्रेन किया अलकायदा को, ये सामने माना है। ऑल्दो कुछ अलग नेताएं हैं, उन नेताओं ने इस चीज़ को नहीं माना है, उन्होंने कहा है इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, बट इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, वी अंडरस्टैंड। आसिफ अली जरदारी ने इस चीज़ को डिनाई किया, लेकिन हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। इनफैक्ट ये एक किताब में आसद दुरानी, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ISI रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मतलब हमने एम्बैरसमेंट बचाने के लिए उसामा बिन लादेन को हमने पाकिस्तान के हाथ में दे दिया। ना तो हम ओपनली एक्सेप्ट कर सकते थे कि उसामा बिन लादेन को हमने दिया है, और हम दोनों तरफ से बचना था। तो ये देखिए पाकिस्तान दोनों तरफ से फंसा हुआ है। अब जो हक्कानी नेटवर्क वाले जिन्होंने CIA ने जिनको खड़ा किया, अब वही पेंटागन लैंगली उनके अगेंस्ट हो गया। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी किस तरह से ये एक माहौल सा बना हुआ है। और इनफैक्ट यूएस के जो ये ऑब्जर्व किया है यूएस ने कि पाकिस्तान का हाथ रहा है। ISI की अपनी ही एक फॉरेन पॉलिसी चलती है जो हुक्मरानों को भी नहीं मानती है। जनरल जोसेफ डुनफोर्ड ने, जो चेयरमैन रहे हैं यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के, उन्होंने ये माना है कि इट्स क्लियर टू मी दैट ISI हैज कनेक्शंस विद टेररिस्ट ग्रुप्स। तो इट्स एन ओपन सीक्रेट, इट्स काइंड ऑफ विजिबल इन वेरियस ऑफ इट्स पॉलिसीज that it has been trying to harbor cross-border militancy in India. So पाकिस्तान इस चीज़ को डिनाई करता रहा है, लेकिन कितना इस चीज़ में वो कर पाएगा या कितना सच है ये हमें भी पता है। तो पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं डीप स्टेट है, ISI स्टेट विद इन अ स्टेट, जिसको डीप स्टेट और डेथ स्क्वाड भी कहा जा रहा है, इट इज़ काइंड ऑफ हैज़ क्लोज नेक्सस विद इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो इसने इस चीज़ को अफेक्ट करने के लिए काफ़ी एक गहरा एक रोल निभाया है, क्योंकि जो स्लीपर सेल है इंडिया में जो एक्टिवेट हो रहे हैं, इन्होंने जो लोगों को शय दे रखी होती है और यहाँ पे रेडिकलाइज करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक कोवर्ट इनकी पॉलिसी है, जो इंटेलिजेंस और सबवर्जन, ये जो सेबोटाज करते हैं, लोगों के माइंड को सबवर्ट करते हैं, तो देश के खिलाफ ही उनको यूज़ करते हैं। अब देखिए पाकिस्तान का डायरेक्ट हाथ माना गया है जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ विदेश में होती हैं, चाहे वो गुरपतवंत सिंह पन्नू का केस हो या निज्जर का केस हो या और भी कई किस्से हैं, ये CIA, अमेरिकन ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6, तो ये सब इसमें मिलजुल के ये इंडिया को कॉर्नर करने की कोशिश की है। ये जो एलिजेड किलिंग है, इसमें भी ऐसा माना गया है कि जो फंडिंग वगैरह जो कुछ गुरुद्वारों में वहाँ पे जो लोगों को प्रमोट किया जाता है ज़बरदस्ती, तो CIA के स्टूज होते हैं, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ISI किस तरह से एक स्टेट विद इन अ स्टेट बना हुआ है। जितनी बार हमने देखा है पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ है, तो ये चीज़ है कि 1990 के बाद का वो जो इंडिया जो ये प्रॉब्लम हुई थी, तो वो फिर से 1990 से भारत में वो जो अलगाववाद फर्मेंट करने की कोशिश करता रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई वुड से डिस्टर्बिंग रोल इन क्रिएटिंग अनरेस्ट इन इंडिया। और भारत में विभिन्न जगहों पे ब्लास्ट होते रहे हैं, जो एक आपस में एनिमोसिटी क्रिएट करने का माहौल पैदा किया है ISI ने। और देखिए नॉर्थ ईस्ट की बात हो या आपके जो नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर की बात हो, ऊपर से चाइना का भी थ्रेट है। तो इस तरह से भारत को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और अपनी जो इंटेलिजेंस जो एजेंसीज की कोलैबोरेशन है, उसको मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है। तो ISI का ये जो स्ट्रक्चर है, हम भी काउंटर इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ करते हैं। भारत की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काउंटर इंटेलिजेंस, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी देश के जो स्ट्रैटेजिक क्या बोलते हैं जो एसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉस एजेंसी कोऑर्डिनेशन चलती रही है। और हम वी आर नो लॉन्गर अ मीक स्टेट, वी काइंड ऑफ पुट आवर फुट फॉरवर्ड विद अथॉरिटी, और वी आर ऑल प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन द चैलेंज, और हम ऐसा करते रहें। तो ये हमने इस एपिसोड में ये समझा कि पाकिस्तान की ISI का कितना हद तक रोल है और किस तरह से इसको फंडिंग भी मिलती है, किस तरह से फॉरेन सॉइल पे भी एग्जीक्यूशंस, असैसिनेशंस कंडक्ट कराता है। बेनज़ीर भुट्टो की बात हो या और भी जो असैसिनेशंस हुई, तो ISI का तकरीबन रोल रहता है। तो फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी पहला एपिसोड ऑफ द स्पाई मास्टर सीरीज़, जिसमें हमने ISI के कुछ किस्से आपके सामने लाए। ऐसे और किस्सों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक सबको जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।